we had reached to one of the questions, like, yeah, we have completed this one. Just a second, maybe I have saved or not. Let me check. Did I send this on WhatsApp as well? No, sir. No. Okay, so I have to write again. Yeah, man. Okay, so let's start with this file. Yeah, we were over here at this question, which was basically related to, yes, kinematics. Yeah, did we complete the question or not? This one. We hadn't finished the question, sir. Okay, then we have reached to this one. Yeah, I have completed all of these. Gradient. Yeah, yes, exactly. We were at this, and I told you that we have started that question. So Yeah. uh, let's complete this again for you, because annotation is not there. I hope that annotation will be saved. Okay, in this one, using figure 1.1 determine the deceleration. So I told you that how to figure out the deceleration. Basically, the deceleration will be determined by using the graph, gradient of the graph, yani that straight part of the gradient of the straight path. Okay, so gradient of the straight path can be calculated something like this. At which point we have to immediately after the release. So immediately after release means we have to draw this line, and the point till it is basically straight. For example, if I draw this line in this way, it becomes chord line. It's not a tangent line. So once you have drawn this one, it is somehow a tangent line. Okay, did you see? Initially, when you Yeah. have just draw it, so just take the gradient of this one. So once you are going to take the gradient, it is 60 minus 0 into 1, so it is almost 60 minus 0 divided by 1. So answer would be equals to 60 meters per second square. But I think so that once you will have this graph in printed format, then its gradient would be different. In this file there is a problem, that's why. Okay, let me draw it in zoom. This is straight line. Yes, so this is the tangent line. Almost the same will be there. Same thing will be there. Okay, so did you check the marking scheme of this question? Mm, I don't think so because this is topical. So I The didn't really topical have the has time. marking scheme, na? I think all the way at the end because I usually miss it. How it's possible? They are topicals of which series? Reads and write publication, na? So they have this at the end of every chapter, right? So just go through that. Once you will see the question, yani there will be section. This is chapter number 4. Wait. There will be something written on that. Unit 1, general physics. So it would be there. Just check it out whether we are making an incorrect tangent or not. But the procedure is same. Okay, then we will go for the force. So force will be equals to m times a. The mass is given to you. Okay, so by using this formula, you can calculate the force. Got it? Then there was an explanation what I have given to you. That was that explain in terms of the forces that the skydiver's motion between time t to 0 and 6 seconds. So yes, as brakes are applied, or as
um, as parachute is open, na? Here parachute is open at time t is equal to 0, 0. As parachute is open, parachute opens, speed decreases. That is why the result, I mean resistive force or drag force decreases, and once drag force decreases, then resultant force F resultant decreases. Okay, F resultant decreases, and once F resultant decreases, then acceleration decreases, and finally the velocity becomes constant. If you see, the velocity is constant over there. Okay. Okay. Okay, the next is unable to resolve this issue. v3camscan.com.user.download. When you are preparing this file, uh, did you get a link of this by camscan? Did you share this from a link? No, I shared by PDF. Okay, shared by PDF. Okay, then it would be some, the file maybe have some corrupt pages. That's why. Okay, explain how opening the parachute cannot reduce the speed of the skydiver to 0. So I told you about that. That because once the parachute is open, the resistive force is increasing. Okay, resistive force increases, but there is a weight force which is not equal to 0. So once weight force will not be equal to 0, or gravity will not be equal to 0, then definitely the speed will never be equal to 0. Okay, speed will not be equal to 0. Is it clear to you? Could you write this in like a normal sentence, sir? I'm unable to write on that now. That is why I'm just trying to annotate in the path in which it is possible only. Yes, Ariba, one thing I have complained with you, that why don't you see the marking scheme once you have this theoretical problems? Because this is not the conceptual issue, because we have studied this time and again, and I believe this, that you have uh, just you have to recall this all. Otherwise, this would not have any issue at all, right? Got So it. I told you that once you are facing the problem, the second phase is just go through the marking scheme. If there is a problem in understanding, then you can uh, consult the notes. I'm the third solution, the ultimate solution. Once the things would not be clear to you in understanding, then you will just ask me, or you will send me the problem. Okay, so save your time in all these problems in it you can do by yourself. Present something else. Okay, maybe I will be able to write on that. Okay, yes. Now check this one out. Yeah, we have completed that all annotation, but I was not able to write on that file. Okay, see, is it done? So there is a constant force of weight which acts downward, right? So the acceleration would be 0, but velocity will not be equal to 0. Okay, is it clear to you? Who has joined me? Yes. Is my screen shared? The new file format. Yeah. Okay, okay. Who has joined me? Semi. Okay, good. Um, Okay, so the next question, question number 58. So we have to start from question number 58. That is, yes, you have problem in this part. When the brakes are applied, the car decelerates uniformly to rest. The friction force applied by the brakes is constant. The distance traveled between the first applying the brakes and
the car stops is called braking distance. Explain why the braking distance is proportional to v square. Very good. So these type of questions are critical questions which would not clear to you once you will see the marking scheme even. Okay. So once the question is, the braking force is directly proportional to square of speed. It means that if the object will have some speed, whatever that is, then you are applying the force, okay, and that force will cause the object to be stopped by traveling distance x. But once this force is this velocity and the speed is increased, by applying the same force, this distance would be increased. But there is a problem in this all situation. What I would like to address here, you know, what is the function of brakes? Yes, Isa, Yes, what is the function of brakes? to stop a moving object like a car or something. Okay, so what type of energy is converted to which other form? Yes, is Uh, Ariba? Yes, yes, Isa, if you know, let me know. no, I don't know, but I'm guessing Okay, from chemical to kinetic. okay, yes. Ariba, what's your concept about this? I thought it would be kinetic to friction. Yes, kinetic energy is converted to overcome the friction force. Okay, or vice versa. You can say the friction force of the brakes is utilized to overcome the kinetic energy. Is it clear? Is that Yes, the right? So the concept is that work done against friction is equals to loss in kinetic energy. Work done against friction, okay, equals to loss in Ke. So work done against friction is F into S, and kinetic energy is 1 upon 2 mv square. Here, braking force is constant, mass of the object is constant. So you can write these two variables here, and then distance is directly proportional to square of speed. That is the reason for this point. Could you explain this one more time, please? Yes, here I'm saying that actually this during this braking process, what do? We convert the kinetic energy of the car into work done against friction. Okay, do you agree? So Yeah. kinetic energy is converted into, you can say, work done against friction. Okay, ji? Work done against friction. So what is the kinetic energy? That is 1 upon 2 m v square. And what is work done? F into d or F into s, whatever you write, it does not matter. Okay, so there are some questions which are solved by this formula nowadays. So you are applying the constant braking force because it is mentioned. So if I say that distance is equals to m divided by 2f into v square. So mass of the lorry is constant, 2 is a constant number, force applied is constant. So distance is equals to some constant times v square. So I can say that distance is directly proportional to square of distance speed. Okay, so this distance is basically, what is that distance? This is the braking distance. Okay, ji? That is directly Okay. proportional to square of speed at which you have applied the brakes. Is it clear to all? Yes. हाँ जी, are you clear with it? Yes, sir. Okay. Yes.
What was wrong in this one and this one? I don't understand like the extension load graphs. Hmm. In extension load graphs, you have to memorize only 2 points. Yes, one that its gradient gives you spring constant and its area gives you elastic potential energy. Okay, and third point which you can calculate, which you can note down, that the curved portion is basically that disobeys Hooke's law. Or the graph is at the point till the graph is linear, it has elastic limit. Okay, so you have to remember these points only, then your question will be solved. Okay, now on figure 10.2, label the region where the spring obeys Hooke's law. So now, can you tell me, just place your scale along with this. Okay, this is the technique. If you have a ruler, just place the ruler and just find where the line is just detached from the ruler. So here is the point where the line, straight line, is basically getting out of contact with the ruler. Okay, Ji? Are you getting this point? Yes, So sir. you will just mark this point. This is elastic limit. Yeah, limit of proportionality, you can say. Okay, got it? Calculate the constant. So how will you calculate the constant? The constant will be calculated by taking gradient of this. So of course the gradient will be simply the gradient of this straight line. Yani that's part straight path of this graph. So once you will take the gradient, it would be something like this. Okay, do calculate, please. It will give you the gradient. Okay. Gradient. For example, this value is this. It is 100, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 108, 9, 10, and 20. Okay, yes, 108. This is the extension. Is what is the extension here? That extension is basically 108 minus 0. Yani that is change in extension. And what is change in force? That is 20 minus 0. So do you know what is K? If I apply F is equals to K times X, then K is equals to F divided by X. So change in force divided by change in extension will be written here. So you will write that K is equals to 20 minus 0 divided by 108 is in millimeter, so it is basically 0.18 meter minus 0. Is it? So just please calculate this all. This is Newton per meter, right? Because I have converted into Newton per meter. If you don't convert this into Newton per meter, you can also write 20 minus 0 divided by 10.8 minus 0. But this answer will be Newton per centimeter. Okay, Ji? Then Okay, sir. Because the calculate the. answer is 111. Okay, 111. So you will just round it up to 110 Newton per meter. Then uh, the length of the spring is at the load of 5.9. Uh, okay, yeah, your original length of the spring is given to you 120 millimeter. Then at 8.5 Newton, you have to figure out the extension. Where is 8.5 Newton? 8.5 will be anywhere here. Okay, anywhere here. Let's say it is 10. So 2 back to 8, 8.5. So just figure out the point over graph, and at that point the graph gives you almost 10, 11, 12, 13, 13 millimeter. Oh no, it is how much? Is 100.
Oh, no, 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 no. Just a second. Just a second. It was 100 and it was 200 now. So one small square is equal to 5. So how many do we have? 8 above. 8 above means this is 140. Oh, sorry. It is 140. So 140 millimeter. 14.8 कर लो यहाँ पे. So 14.8 or 140 millimeter mean here you will write 0.148. अब कैलकुलेट करो जरा. Yes, Isa, do you have calculator? No. बच्चा कैलकुलेटर लेके क्लास में आया करो ना. कहाँ पड़ा हुआ है? मैं 1 मिनट लाती हूँ. जल्दी से लेके आओ. शाबाश. हाँ भाई, अरीबा कैलकुलेशन करो जब तक. अरीबा तुम्हारे पास कैलकुलेटर है? Yeah. जैसे स्पीड पकड़ो ना पुत्र. इतनी देर में तो बंदा जुबान ही कर लेता है. I don't get the equation we're supposed to do for the third part. That's the thing. What? What's the equation? 0 divided by 0.148 minus 0. That's it. But like, why did we change it to 0.148? Oh. Did you notice this? मिलीमीटर है ये. Yeah, but before we had 0.18. ना वो पुत्र तूने बीच में बिट मिस कर जाती हो ना. मैंने कहा कैलकुलेशंस में व्हेन आई वाज जस्ट काउंटिंग. एक्चुअली क्लास में सब सो रहे होते हैं ना. आई काउंटेड 100. तो 100 में से ये मैंने कहा इट इज 200 ना. तो 100 100 I just counted 1 2 3 4 5 6 in this way. That was an incorrect calculation because now from 100 200 देखो कितने स्क्वायर्स हैं? 20. Yeah. So one small square is equal to what? 5. 5. हाँ, तो अब आप देखो. Just consider this line. This line is equal to which point? क्या नंबर आ रहा है इसका? जल्दी से करो और उसकी वैल्यू प्लेस करो. शाबाश. Okay. Answer is 1.35. नहीं, ये वाला नंबर काउंट करो सारे. ये चेक करो ये कितना नंबर है. 100 100 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 5 are 40. 140. Yes, so it is 140. ठीक है ना. 140 millimeter. तो 140 millimeter is the extension. So अब आप क्या करोगे? 140 ये एक्सटेंशन करोगे. मैं एक दफा इसको अरेज करता हूँ सारा. दोबारा लिखता हूँ. आप लोग प्लीज थोड़ा सा ना ये काउंटिंग वगैरह में मुझे ये जो ग्राफ है इसमें मुझे थोड़ा कम दिखता है. ये जो स्क्वायर्स होते हैं आप लोग काउंट किया करो और मुझे बताया करो कि यहाँ पे इतने स्क्वायर्स बन रहा है. ठीक है. Okay. इफेक्टिवली I Okay. think it's 143. 143 है. Okay, good. तो extension is equals to the variation in the force divided by variation in the extension. यानी आप f by x भी लिख सकते हो because it is just 2 marks number, so no need to write the formula even. Change in force is from 0 to 20, so you will write 20 minus 0 because unit is in Newton, so straight plane unit है. But extension has a problem. It was 143 because you have the printed one ना. Ariba, you have printed one as well. उसको अपने सामने रखा करो जब आप ये काम कर रही होती हो ना. तो आप उसको सामने रखा करो so that if we are having any problem in the scanned copy, so you can calculate it from the printed one. So it is 143 minus 0. It is in millimeter. So millimeter को convert करना है हमने. 143 millimeter is equal to how many meters? Just divided by 1000. तो ये convert हो जाएगा किसमें? It will be into meter. So this it is basically 0.143 मीटर हो जाएगा. ठीक है. तो आप इसको कर लो 20 minus 0 divided by 0.143 minus 0. अब कैलकुलेशंस करके दो क्या आंसर आएगा? This is wait, 1 this is 142.857. So 143 हो गया. So you will just
mean write in this way 140 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, बिकॉज इसको हमने राउंड ऑफ करना है ना, टू सिग्निफिकेंट फिगर से ऊपर नहीं जा सकते हम, सही है। Yeah. Okay. Next. Yes, this was the question that the length, original length is 120 millimeter. The load is 8.5 Newton applied on the square. Calculate the length after this. तो आपके पास 120 millimeter is the original length, है? 120 millimeter is basically L नॉट है आपके पास। अब आप extension find करो for 5.8. Where is 5.8? It is 10. तो सॉरी 8.5, हाँ 8.5। सो 8.5 कितने स्क्वायर्स पे जाएगा? 16 पे, 17 पे। इज इट? अरे बस 17 स्क्वायर काउंट करो शाबाश जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I think it's 13 20. 16 17। कुछ इसी तरह का पॉइंट बनेगा, है ना? 20 पे ओके 8 इधर बन रहा है, 7 this way. So what is the extension? 20? 20 तो No, नहीं no, हो, no. I 20 was. Mm, 10 20 19 18 17 ये, और यही पॉइंट बन रहा है। और इस ये वाली वैल्यू दिखाओ जरा मुझे क्या है। हाउ मेनी स्क्वायर डू यू हैव? 1 2 3 4 5 6 7 I 8 think 9 10 17. 11 12। ओ बच्चे नहीं, 12 स्क्वायर्स हैं। सो Oh 12 no, I'm मल्टीप्लाई talking बाय about the 5 x-axis. इज, हाँ एक्स एक्सिस तो मैंने कर लिया ना, 17 पे आपने चेक करना है। तो इट इज बेसिकली 17 is equals to how much? 8.5. Okay, is it clear to everyone? But why? Yes. बेटा अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये 8.5 कैलकुलेट करो ना, 8.5 न्यूटन पे जाओ तुम। वेयर इज 8.5 न्यूटन इन योर ग्राफ? Um, बताओ मुझे, इज hold दैट on. लेबलिंग करेक्ट? शाबाश, हरी अप। 10 इज दैट divided अ by 20 gives you कैलकुलेशन? 7.5. 1, 2, 3. 8. 8.5 should be one square ahead. वन स्क्वायर ऑफ, वन स्क्वायर बिफोर 10? No, no, it should be 2 squares before 10. You've made it 3 steps before 10, sir. 17 होगा ना। देखो 8.5 कितने स्क्वायर होंगे, बस मुझे इतना बता दो। 8.5 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर्स? 17 squares. ओके, तो 17 10 से 3 ही पहले आएंगे ना, बिकॉज दीज आर 20 स्क्वायर्स, है ना? It's behind 4, na, sir? नहीं 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 नहीं, ऊपर मेरी लाइन सीधी हो गई है ना वापस, यहाँ Okay. देखो तुम। ये तो मेरे हाथ की सफाई है। देखो यहाँ मैंने शुरू किया कितने से, 18 से, और ऊपर में 18.5 पे लेके चले। एक्चुअली सॉफ्टवेयर में ना इसमें लाइन सीधी नहीं डलती, मैं इसलिए इस वाले Yeah. पे कोशिश करता होता हूँ कि All right. I get समझ it. गए बात? Yeah. चलो तुम्हारे लिए मैं इसको करता हूँ डिलीट, और एक लाइन लेके आता हूँ। करो शाबाश, जल्दी से एक्सटेंशन बताओ। सिलेक्ट इंसर्ट माय रिव्यू शेप। एक दो तीन, यस अब सही है। Yes. ओके, सो एट दिस पॉइंट आई विल गो टू दिस पॉइंट। इधर देखो, ये तुम्हारे पास कितना नंबर स्क्वायर है? इट इज स्क्वायर नंबर 12। तो स्क्वायर नंबर 12 इज बेसिकली 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 तो 60 मिलीमीटर आपकी एक्सटेंशन है। सो 60 मिलीमीटर इज एक्सटेंशन। सो इसका क्या हो जाएगी बच्चे? फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन होती है ना। तो ओरिजिनल लेंथ इज योर 120 मिलीमीटर प्लस 60
So the length is 180 millimeter. Length, not extension. ठीक है? Sorry. Yes. क्लियर है ये सबको? Yes, Yes. sir. Okay. Yeah. Okay. अब आपको ये बता रहा है कि the load is pulled down. Okay, इसको ऊपर से continue करना पड़ेगा. Then you will be able to understand. The weight of an object is 4 Newton, and the on a planet, and where the acceleration of the free fall is 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, ये आपके पास इसका ग्रेविटेशनल वो है, ग्रेविटी का वैल्यू है. तो उसके बाद आपको बोलता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्या करना है उसने? कैलकुलेट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है. तो आप एफ इज इक्वल टू एम ए लगा दिया आपने. अच्छा, ये क्या करते रही हो तुम? है भाई? हेलो Hmm? मिस अरीबा, व्हाट वर यू डूइंग? So it should be equal to the mass of the object. Oh, I took the weight as a force. उत्तर नहीं, एग्जामिनर को कंफ्यूज ना किया करो ना. So use this formula. W is equal to mg. You used all the correct values, but formula is incorrect. तो आपको फार्मूले का यहाँ नंबर भी नहीं मिल रहा, तो आप ऐसे ही अपने वो क्या कहते हैं रेपुटेशन खराब कर रही हो ना एग्जामिनर के सामने. ठीक. Okay. So 4 is equals to mass into 9 point sorry 8.7. So 8.7 किया, so you got this. Actually whenever you have 3 marks ना, then formula, values and answer, that matters. The 2 number होंगे 2 marks, so only values and answer matters. तो mass आपके पास आ गया कितना? 0.46 kg. That is fine. Next, move on. Now this mass is released from the spring. अब आपको ऊपर से बोला the load is pulled down small distance below the equilibrium position as shown in the figure. The load then moves up and down between the position A and B. Okay, position A and B. A is the extreme position, B is the upper extreme. So basically, where would be the middle point? Yani equilibrium position will be over here. है ना? This will be the middle position. So actually your block will be oscillating about this. ये about this का मतलब ये है कि इधर से ऊपर भी जाएगा block and it would oscillate below the center. So this is basically the main position. अब आप करिए कह रहे कि describe the energy transfer which occurs when the load moves. So when load moves from position A to B, from position A to B, uh, its extension is decreased, है ना? पहले तो ये complete extension पे है ना, isn't it? Hmm. Right? Here it would be normal, here it would be compressed position. So मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ. That is the compressed position of the spring. This is the Okay. extended position of the spring, and here it is equilibrium. So first of all, the okay, इसने आपको बोला हुआ है A to equilibrium position. So A to equilibrium position. Equilibrium position में it has the highest velocity as well as some of the gravitational potential energy at this point. मैं mark कर लेता हूँ. Let's say it is O. So at O, what type of energies do you have? A से शुरू करते हैं. At A, Ke equals to 0 because that is at rest. Gp equals to 0 because that is at lowest point. AP is maximum. ओके, ये बात याद रहेगी. Yes. Then at point O, kinetic energy is maximum. Gp is greater than 0. Elastic potential energy is 0. ठीक है, ये बात याद रहेगी. For point A. Yeah, at point no, at point O, equilibrium position. A Okay. के लिए तो मैंने ये लिख दिया ना. At point A is this, at point O is this, and at point B, basically the spring would stop again, so kinetic energy would go to 0. It has the highest GP over here,
So gravitational potential energy is maximum, you can say. And EPE क्या होगी आपकी वहां पर? That would also be maximum because spring is completely compressed. So from A to equilibrium position क्या हो रहा है कि kinetic energy was zero, gravitation was zero, EPE was maximum. So here kinetic is maximum and GPE is also something. So आप लिखोगी कि elastic potential energy is converted into GPE and KE. तुमने मार्किंग चेक तक भी नहीं की कि मैंने ये सही लिखा या गलत लिखा। लड़की आज के बाद ऐसा नहीं करना। फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू पोजीशन बी, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू पोजीशन बी अगर आप देखो तो विच एनर्जी वाज मैक्सिमम? काइनेटिक वाज मैक्सिमम एंड ग्रेविटेशन इज स्टिल इंक्रीजिंग। तो आप लिखोगी कि मैकेनिकल एनर्जी, यानी आप लिख लो काइनेटिक एनर्जी is converted to GPE and EPE, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब स्प्रिंग कंप्रेस भी हो और उसने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी गेन की। तो दिस इज बेसिकली द चेन इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, यानी चेन इन एनर्जी ड्यूरिंग दिस ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, सब बच्चों ने याद रखना है, ठीक है? Okay, sir. Okay, again by using the information in figure 2.1 determine the spring constant, so you will solve it by yourself now. ग्राफ गिवन है ना? नहीं, ये क्या है? ये कुछ अलग है। ये इसको क्या करना बच्चे? ओके, दिस इज द स्प्रिंग। Yeah. ठीक है, ठीक है, ये ऊपर नीचे है क्वेश्चंस। व्हाट इज दैट? नहीं, ये तो नहीं है। It is. This is something, then it is it that spring S? E Oh spring? no, I don't नहीं, think it is. I thought it was. That's something different. So this question is, I have solved it. It's a simple सा formula ही है कि this is the length, unstretched length of each spring, right? And they are pulling the two handles in opposite direction. Maybe, yeah, the question is not complete, but they are applying some force in these directions. तो आपने क्या करना है कि जब आप extension find करोगी तो extension is equals to force divided by sorry, I think K find करना था, तो K is equals to force divided by extension of single spring। तो आपकी जो force है ना, that is applied on 5 springs, 1 2 3 4 5 springs। तो आप 4 को क्या force को क्या करोगी? You will divide by that 5, ठीक है? तब आप अप्लाई कर सकती हो, अदरवाइज नहीं। ये क्वेश्चन देख लेना, if it is clear then fine, otherwise send it back to me, मैं इसको समझा दूंगा तुम्हें। Now the game is in the center of masses. Okay, in center of masses. Okay. ये क्वेश्चन है that it is related to the toppling of a car, right? कह रहा है कि explained by the bus begins to topple। तो bus begins to topple because the center of gravity or the line of weight force is moving out of the base area। अब देखो ना, basically इसका जो center of weight है, it is over here, approximately over here। सही है? The tires, ये जो टायर का है ना, it must be passing through this, it's a vertically downward force। So once it is vertically down, अब पता नहीं ये exact vertical है या नहीं, yes it can be। So once it is vertically down, weight will be acting downward। So until unless it is passing through this base area, this will not topple over। तो आपने लिखा हुआ है tilted platform level is too high, so the center of mass is ये क्या लिखा हुआ बच्ची? This is unbalanced. टोटली इनकरेक्ट फिजिक्स लगा दिया तुमने आखिर में जाके, ठीक है? तो
हाँ ठीक है, चलो, ठीक है, तो sure। अच्छा, तो तुम लिखोगी कि व्हेन द सेंटर ऑफ वेट इज, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो चेंज नहीं होगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो लाइन ऑफ वेट फोर्स इज हाँ, that is crossing the base area or it is out of the base area, that is why it begins to topple over। मैं इधर लिख देता हूँ कि line of weight force is almost, यहाँ पे बिल्कुल out नहीं है, नहीं तो topple over हो जाती, almost out of base area of lorry, that is why। ठीक है, एक्चुअली इसकी पूरी साइंस बच्चे ये है, ये कौन कौन हो क्लास में, कौन कौन है आप लोग? It's me and Iza and Zainab. ओके जैनब, तुम तो बोल ही नहीं रही हो, खैरियत? Yes, sir. मुश्किल क्वेश्चन है तो तुम तो बोल ही नहीं रही हो, लड़की क्या करती हो? कोई तो थोड़ी बहुत हमें हेल्प तो चाहिए ना। ये लो, ये देखो, ये आपके पास ना, दिस इज द, लेट्स से ये एक प्लेटफॉर्म में बना रहा हूँ, मैंने जस्ट क्वेश्चन समझाने के लिए ये डायग्राम ड्रॉ किया है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ, इसको मैं टॉपल करवाऊँ, ये देख रही हो। अब टॉपलिंग में ये जो आपका एक्स एक्सिस है ना, यस, दिस इज द पॉइंट अबाउट या फ्रॉम विच द टॉपलिंग विल स्टार्ट। ठीक है, इससे पहले टॉपलिंग नहीं स्टार्ट हो सकती, बिकॉज इफ यू सी, दिस इज दैट फिक्स। ये अब देख रही हो आप लोग, लाइन बिल्कुल बेस के एज पे है, तो व्हेन इट इज एग्जैक्टली एट द एज ऑफ द बेस, बेसिकली इसने करना ये था, यस, ओवर हेयर, इट इज ओवर हेयर। तो प्रॉब्लम ये है कि वंस it would cross that, it would topple over, and once it would be shifted this way, right side, तो ये वापस बस अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक है, Okay, got it. उसके बाद आपको बोला कि there are 30 passengers in the upper compartment of the bus and 2 passengers in the lower compartment of the bus। क्या बात है, हवा खाने वाले पैसेंजर्स हैं सारे। State the effect of the stability of the bus and reason। तो जैनब मुझे बताओ ना जरा क्या आंसर होगा। आप उन्होंने बता दिया, वैसे ये बताते ना तो मैं तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछता वैसे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इन्होंने बताया, जैनब है क्लास में। अरीबा क्यों बताया तुमने? जैनब बताओ मेरा बेटा, जल्दी करो, शाबाश, टाइम शॉर्ट है। No, वैसे मुझे सही से नहीं नजर आ रहा। क्या नहीं नजर आ रहा? ये पेज डिसअपेयर हो गया है। कुछ कहीं पढ़ सकते हैं? I don't know. यस, कह रहे डबल डेकर बस है and there are 30 passengers in the top floor and only 3 passengers in the 2 passengers in the lower deck, so why it is dangerous? More mass is above, so center of gravity is raised। जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा ना, किसी चीज का रेज्ड होगा, then instability takes place। ठीक है, अब आपको मैं इसकी रीजन बताता हूँ। देखो, जस्ट लाइक योर ऑर्डिनरी डेली लाइफ, आप कोई सपोज you have sort of कंटेनर, कोई आपने कोई कंटेनर लिया ये छोटा सा, ठीक है, एंड इट seems के इट इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे इसके लिए? ये काफी अनस्टेबल है, ये बस इतना बेस है इसका, तो would you put more mass here in the lower portion or you will place more mass here at the top portion? At the lower? Lower portion, yes। ठीक है, उसकी वजह ये है कि we want the center of gravity lower, that is why it would have stability। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसने ये वाला क्वेश्चन कर दिया, ये
बस का ट्रैवलिंग का है, mass of कितने masses के क्या करना था बच्चे इसमें? 73 passengers. Calculate the mass of the bus and driver and 73 passengers. अच्छा total add करना है. Okay, then a fully loaded bus accelerates uniformly from rest to a speed of 14 meters per second, and time taken to speed this up is 14 meters per second is 20 seconds. Calculate the resultant force during this acceleration. अरीबा इसमें क्या इश्यू था मेरा बेटा? Why this question was hard for you? Yes, come on, शाबाश शाबाश बताओ मुझे ताकि मुझे आइडिया हो जाए ना कि where do you feel problem? Sir, your voice is lagging really bad. I don't know what you're saying. हाँ सबके लिए लैग कर रही है या आपके लिए कर रही है? Not for me. हाँ भाई अरीबा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. मैंने कहा what was the problem here? What issue? I think I wasn't able to remember the equation for this, the resultant force equation. इसके लिए मैं यहाँ से आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ? बताओ. Sir, can you please repeat that? Yes. Sorry. F is equal to M. Good Mass grief. is 21000 kgs there, and acceleration is v minus u divided by t. That's it. ठीक है? तो Got it. ये आप कर लिया करो, ये चीजें याद करने वाली होती हैं. Divided by time taken is 20 seconds. So you will solve this and you will find the answer here. Okay? ठीक है. Okay. Energy, work and power पे आ जाते हैं. Yes. Cycle तो बहुत अच्छा है ये. कह रहा है कि calculate the energy in joules stored in the battery when it is fully charged. So you have the values of 600 watt in 16 minutes. So power is given and energy is given. Sorry, time is given and you have to calculate energy. So formula Ariba ने लगाया है, energy is equal to power into time. That is fine. So time को इसने 60 into 60 किया because she has converted energy into time into seconds. So very good. Next, energy store of the battery is chemical. Okay, the bicycle has a motor with an electrical power of 250 watt. Calculate for the time for which the battery can power the bicycle. Okay. एक बात बताइए. In this question, the total energy is equals to, this is the total energy supplied by your battery, that is equals to 2.16 into 10 raised power 6 joules. Okay, now what is the power rating of this one, this battery? So आप basically करोगे, the energy supplied by the bicycle is equals to 250 watt into time taken, right? So just आपने consider ये करना है कि the time will be equal to 2.16 into 10 raised power 6 divided by 250. Yes. तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? You will have this answer. मतलब प्रॉब्लम सीधा सीधा है कि I have 2.16 megajoule energy, okay, total, and my bicycle uses 250 joules per second. ठीक है? तो how much time will it take? तो आपने इसको डिवाइड कर देना, सिंपल. ठीक है? Okay. Okay, then next is yes, this is the question. Or okay, the mass of the okay, कह रहा है कि एक टरबाइन का क्वेश्चन है. The turbine information in figure 3.1, a model turbine uses to demonstrate the use of the wind energy to generate the efficiency to produce the electricity in the wind blowing towards the model as shown in the figure. और फिर आपको ये बता रहा है कि the mass of the air passing through the circular area swept out by the turbine bench is 7.5 kg. The kinetic energy in each second is 240 joules. Calculate the speed. So
काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv स्क्वायर का फॉर्मूला है, एंड v इज इक्वल टू, जस्ट रीअरेंज दिस ऑल, 2 times काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास करोगे तो यू विल गेट दिस। ओके, बेसिकली ये v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर के v करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओके जी, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. फिर कह रहा है कि the kinetic energy of the air drives a generator, state the power of the air passing through. So आपको पता है कि the energy is equals to power into time, and power is equals to energy divided by time. So basically, sorry, energy divided by energy is given to you. इतने joules है, 240 joules per second, so it is 240 watt actually. So that is why it is correct. फिर उसको बोला कि the output current is the generator is इतना, the output potential difference of the is 11 volt, calculate the power output. So P is equals to VI या VIP. So 2 into, yes, 2 into 11, so power is 20 watt. Oh wow, that is good. अब आपका क्वेश्चन आ गया एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी मींस, यस अरीबा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन में आ चुका है। यूजफुल आउटपुट, आउटपुट divided by input times 100. Okay, तो यूजफुल आउटपुट कितना था आपकी बैटरी का, 22 watt, and what was the total input you were providing to the battery, 240, okay, Okay. into 100. So you can calculate this number as well. ठीक है? Okay. Then density is given to you, and at this, the speed of the turbine is given to you, the capital volume of the air passing through the circular area swept out by the turbine blades in each second. Okay, ऊपर जो स्पीड आएगी ना आपकी, this one, इधर कैलकुलेट करनी थी स्पीड, कैलकुलेशंस की जब तक, क्या नहीं की कैलकुलेशन? For this equation Yes. or what? Okay. Okay, just मैं आइडिया देता हूँ, you can solve it by yourself in the time. देखो आपको ना वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू, सॉरी ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, इसलिए एक बार परेशान नहीं होना, बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं याद होती। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। सो हाउ मच मास वाज देयर, कुछ वैल्यू थी मास के ऊपर, हमें कैलकुलेट 7.5 केजी, 7.5 केजी डिवाइडेड बाय आपके पास 1.3, सो यू विल कैलकुलेट दिस एंड यू विल गेट द वॉल्यूम। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, वो स्पीड की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेशन सोच रहा था, ओवर थिंकिंग, लेकिन वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करवाना है। हाँ, अब अगर मैं सर्कमफेरेंस पूछता ना तो तब मुझे जरूरत पड़ती, तो वो चलो नहीं, उसने पूछा हुआ एग्जामिनर अच्छा था तुम लोगों का। अच्छा, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर एज इट हिट्स द बॉटम इज 21 मीटर पर सेकेंड। तो आपने कैलकुलेट करना हाइट, तो एक्चुअली आप लोग यहाँ पे mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे, तो दैट विल बी बेस्ट रिजल्ट गिविंग, ठीक है, बिकॉज mass is not available, so mass will be cancelled out, तो v square will be equal to 2gh, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इट विल बी 2gh का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो वैल्यूज प्लेस करो और आंसर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कर लोगे इतना आगे या नहीं? यस, हेलो अरीबा, माय गॉड, Sir, can you hear me? yes yes I can hear you, do you hear me? Yeah. Yes. I'm trying to speak. मैं ये कह रहा हूँ कि will you be able to do this all right now? Hopefully. वैल्यूज अगर ना प्लेस में तो मुझे बता देना, बता दूंगा जी की वैल्यू क्या है, एच कितना है, वहां पे वो आ जाएगा दिमाग में, बल्कि हाइट कैलकुलेट करनी है। वेट, इसको हाइट को सब्जेक्ट बना के देता हूँ तुम्हें, क्यों तुम नहीं कर पाओगी एंड में, जस्ट अ सेकेंड, मैं हाइट को सब्जेक्ट बना के देता हूँ। हाइट 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 इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, बस तुम इससे कर लो, सारा कुछ गिवन है, ठीक है, और इसमें वैल्यूज प्लेस करके आंसर निकालना है, नो नीड ऑफ कन्वर्शन एट ऑल, ठीक है जी। उसके Okay. बाद आपके पास क्या कर रहे हैं, yes, the train transports 80 passengers, each of mass is इतना इतना इतना,
65 kg एंड 600 मीटर्स हाइट पे लेके जा रहा है, तो आप ये क्यों नहीं हो सका आपसे बच्चे? MGH का फॉर्मूला यूज करो, 80 पैसेंजर्स हैं, 65 हर एक का मैस है और 1600 आपकी हाइट है, आंसर विल बी हियर। उसके बाद आपको बता रहे हैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो एफिशिएंसी के लिए आपके पास इसका इनपुट पावर गिवन है, ठीक है, और आउटपुट पावर आपका यहाँ से आ जाएगा, यानी दिस आंसर, ये इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपका जो भी आंसर आएगा, दिस आंसर डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 1500 किलोवाट टाइम्स 100, ठीक है, और उसने टाइम भी मेंशन किया हुआ है 30 मिनट्स है। तो आपने इसको ये जो पावर है इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, बल्कि मैं छोटा सा फॉर्मेट बना के, तुम जब तक कैलकुलेशंस करो ना, बट तुम लोग कैलकुलेशंस नहीं करके मुझे बता रहे हो ना, हरी आप, मैं जो वैल्यूज दे रहा हूँ आई नीड आंसर्स, जब तक मैं अगले पार्ट पे जाता हूँ आप लोग मुझे ये तो वैल्यूज बताओ ना जल्दी जल्दी, शाबाश। अरे अब ये बाकी लोग कैलकुलेटर कहाँ पे, आप लोग ईद पे ईद ही दोगे किसी को कैलकुलेटर्स की? 8.32 into 10 raised to power 6. 8.32 into 10 raised to power 6. यस, ये आपके पास आ गया जीपी। नाउ आप करोगी, पावर है ना, इनपुट पावर और आउटपुट को भी पावर में कन्वर्ट करना है, तो आउटपुट पावर कैलकुलेट करो जल्दी से। आउटपुट पावर क्या होगी? आउटपुट पावर इज 8.3 into 10 raised power 6 डिवाइडेड बाय, क्योंकि आपके पास पावर होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो 30 मिनट्स हैं, तो 30 into 60 कर लिया, तो इट वुड बी बेसिकली योर पावर आउटपुट। तो आप करो जल्दी से, पी आउट कैलकुलेट करो, और पी इन आपका ये है 15,000, और जो आंसर आएगा वो आपकी एफिशिएंसी होगी, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लेना, ठीक है। I don't get it. Could you please explain that again? यार सॉरी, आई डोंट हैव दैट मच टाइम, आपने एनर्जी को पावर में कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपने ऊपर कैलकुलेशंस दे दी मुझे, दिस इज व्हाट, दिस इज एनर्जी, ओके, तो हियर आई विल यूज पावर, तो पावर किसके बराबर होता है? एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, Yeah. ओके, एनर्जी आपके पास आ गई 8.3 into 10 raised power 6 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 30 मिनट्स है, सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सेकंड्स। तो अब आप बताओ आउटपुट पावर क्या आएगी? कैलकुलेशन करो, जल्दी करो, शाबाश बेटा जी, टाइम नहीं है अभी, ये आप लोगों की क्लास से ऊपर जो टाइम चल रहा है सारे का सारा, ये मैं आगे कोर क्लास का टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को, जल्दी करो, मेरी कैलकुलेशन इन टाइम चाहिए होती है। 4,600. कितना आया? 4,600. 4, this is what, this is your output power, P out is equal to 4,600, that's it, Yes. okay, और इनपुट पावर आपके पास कितनी है? that input power is 1500,000, तो आप मल्टीप्लाई करोगी 4,600 into, सॉरी, डिवाइडेड बाय 1500,000 into 100 कर लोगी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाओगी तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। That's 0.30. परसेंटेज भी निकाल दिए इसकी, हाँ जी। ये वैल्यूज में कुछ देख लेना, कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो, इतनी कम एफिशिएंसी नहीं होती ट्रेन की बेसिकली, ठीक है, बस सिर्फ वैल्यूज में देख लेना कैलकुलेशन ओके हैं या नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें क्या प्रॉब्लम आया आपका? जब I Yes. wanted, like, I didn't know what the process for coal could be. बेटा यस, गो थ्रू द नोट्स, ठीक है, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, नोट्स पढ़ो। और इसमें क्या है, द स्कायर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कायर ड्यूरिंग द डिस्टेंस descents it during the descent is 2800 meter, the average resistance force is this, calculate the work done against the resistance force, so work done का फॉर्मूला लगाओ, F into D करो, ठीक है, तो आपके पास फोर्स गिवन है 220 न्यूटन is the force, and what is the distance? 2800 meter, that's it, ठीक है,
तो यस, अब ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्रिकी है। तो काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है। दैट काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली, हाँ अब आप देखो, व्हेन द स्काई इज फॉलिंग डाउन इट हैज सम डिस्टेंस। मैं यहाँ स्पेस, चलो इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इट हैज gravitational potential energy all the ways, so that is converted into ke plus work done against friction। ठीक है, तो gp आपके पास किसके बराबर है, mgh के बराबर है। दैट इज इक्वल्स टू के प्लस, ये कैलकुलेशंस आई जब तक, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, 61600 6160000 है बस, 000 000 joules। okay, so that is your 61600 joules। अब आपने क्या करना है कि you have to just subtract this number from here। But sir, why is it going to be the work and also the KE? ये क्वेश्चन शुरू कहाँ से हो रहा है? It started like from I think over here. यहाँ से? Yeah. No, A B C के बाद A B कहाँ से आ गया? Something is missing in this one। The sky starts from rest, so its kinetic energy is 0। The average resistance force is इतनी। The work done against the friction तो हमने कर लिया ना। तो that kinetic energy that sky at the end of its race हमने find करनी है। तो that is the same thing। ये जो gravitation potential energy loss कर रहा है ना, it is appearing in the two forms, kinetic energy और this one। तो gravitation potential energy के लिए मुझे इसका mass चाहिए। mass given हो तो आप कर सकती हो, देखो आप कैलकुलेट करो जीपी दैट इज इक्वल टू mgh करो। तो अगर mass आपके पास गिवन है क्वेश्चन में तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 9.81 एंड 2800। ठीक है, ये जो भी आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की 6.6000, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन आप क्या करते होते हो, आप ये करते होते थे कि लॉस इन जीपीई, लॉस इन जीपीई इज इक्वल टू गेन इन के, ऐसे ही करते थे ना। लेकिन नाउ वी हैव वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एज वेल। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस वैल्यू इन एट द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो आप यूं समझ लो, ये मैंने नोट्स में लिखा भी हुआ है, इन वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज लॉस इन एनर्जी माइनस गेन इन एनर्जी, माइनस गेन इन एनर्जी। ठीक है जी, गेन इन एनर्जी। तो वंस यू विल यूज दिस ऑल, लॉस आपका यहाँ पे किसकी फॉर्म में हो रहा है, द लॉस इज इन जीपी। लॉस किस में हो रहा है, जीपीई में हो रहा है, और गेन किस में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप रिफ्रेम कर सकती हो, इस इक्वेशन से आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकती हो। ठीक है, वी हैव ऑल दीज वैल्यूज। अच्छा जी, ये हो गया, दिस इज समथिंग डिफरेंट। हाँ ओके, कह रहा कि द बॉल इज regaining the shape and rising the from the surface। तो हाँ, स्टेट द एनर्जी चेंज, तो शेप रीगेन करेगी तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी ईपीई। ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, अगर ये हाइट भी गेन करेगी तो आप जीपी लिख सकती हो। ठीक है, इट इज गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, लेकिन हम इसको मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं, बिकॉज शेप चेंज होगी उसकी, तो शेप चेंज के बाद वो क्या करेगी, राइज करेगी। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल एट व्हेन इट हिट्स द सरफेस। तो अगेन आपका यही फॉर्मूला लगेगा, मैस गिवन है, हाइट गिवन है, और फ्रिक्शन नहीं गिवन, राइट। तो आप करोगी जीपीई इक्वल्स के ई। ठीक है, तो एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, मैथ्स वैसे ही कैंसिल हो जानी है। ठीक है, एंड v² विल बी इक्वल टू 2gh। तो प्लेस करो वैल्यूज 9.8 और
हाइट कितनी है आपके पास? हाइट इज 2 मीटर्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगी तो ये स्पीड आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, Got it, sir. Got it. ओके, ये सारे का सारा है। इसमें एक दफा तुमने क्विक गो थ्रू कर लेना, अगर फिर भी कोई मसला होता है तो फिर मुझे बता देना कि ये वाला क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो वी विल डिस्कस दैट। Okay, okay, sir. ओके, तो बाकी आप लोगों ने अपना काम करना है और मुझे वो पेपर टेस्ट आप लोगों ने भेजना है, व्हाट आई हैव सेंड टू यू बाय ऑल मींस। You sent a test, sir? यस, असल में तो Sir, फोटो in ही ना। कल की क्लास तक, मतलब बल्कि मंडे की क्लास तक। हाँ, मंडे तक आप लोगों ने भेज देना, ईद से पहले पहले भेज देना, ठीक है? कोई मुझे भी गिफ्ट चाहिए होता है ना ईद में। सही है। Okay. हाँ, ताकि थोड़ा सा मुझे भी सुकून हो के बच्चों ने काम किया। बाकी अब आप लोगों की क्लासेस इंशाल्लाह दे ऑल विल बी रिज्यूम्ड आफ्टर ईद, ईद